Hi guys, welcome back to 2 in a Billion podcast. Today we'll be talking one of the strongest team in this season of IPL, which is Rajasthan Royals. They have been doing quite well in this seasons, and let's begin with the first question, Sashank. What do you think has changed for them in this season? आई थिंक दे हैड अ रियली गुड प्री सीजन फर्स्टली। जो भी उन लोगों का गैप्स था लास्ट ईयर का, उन लोग ने मैक्सिमम तो वो पहले ही कवर कर लिया था। जैसे कि संजू सैमसन गोइंग, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो टीम पे बिल्कुल भी दिखा है कि दे मिस हिम। ही इज अ बिग प्लेयर। ऑल्दो उन लोग का मिडिल ऑर्डर इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टिल दैट नंबर 3 गैप दे हैव फिल्ड इट विद ध्रुव जुरैल। तो उसके अलावा देखेगा, जो प्री ऑक्शन किया उन लोग ने, जैसे कि उनको संजू देना पड़ा, तो उसके बदले द बेस्ट दैट दे कुड गेट, दे गॉट इन जड्डू, दे गॉट इन डोनोवन फरेरा, दे गॉट इन सैम करन। अनफॉर्चुनेटली ही वाज इंजर्ड ऑफ कोर्स। और उसके अलावा दे हैड अ रियली गुड ऑप्शन टू। जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट में लैकिंग था लास्ट ईयर, दे हैव कंप्लीटली रिवैम्प्ड देयर स्पिन डिपार्टमेंट एज वेल। जड्डू को लेके आए। रवि बिश्नोई वाज अ रियली गुड पिक फॉर देम फॉर 7.5 crores। सो बहुत सॉर्टेड है यार। मेरे को लगता है कि संगाकारा एंड देयर एंटायर मैनेजमेंट टीम रियली डिड अ रियली गुड जॉब। Sangakkara has done quite a great job over here. So they've covered all their bases, and that's the reason they've been doing well in this season. And I feel they are going to be tough to beat. They've maintained the core quite well, and this is what it's helping them to gel up. And with Riyan Parak taking up the captaincy, he's taking good decisions on the field, off the field, maintaining the coordination with the team. And yes, the form is very important for them in terms of the bowling department. Archer clicking in, Sandeep Sharma being economical over there. Again, talking about Ravi Vishnu, which you mentioned about. They all are clicking from the bowling side, which we'll be talking later about it. One of the things I want to ask is, are they too reliant on their top orders? Looking at the middle order batting, they've not been doing well. What do you think? It appears so. I still feel वहां पे गैप है उनका। Obviously we all know Jaiswal and Suryavanshi have been doing really well for them in the past few matches, but उसके बाद तो देखेगा ध्रुव जुरैल, although he had a good start to the season, उसके बाद उसने इतना परफॉर्म नहीं किया है। और सो एंड रियान पराग इज ऑल्सो नॉट इन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म। तो ऑब्वियसली वो जो ओपनर्स के बाद एक गैप है टिल डोनोवन फरेरा। आई डोंट थिंक जड्डू, ऑल्दो ही प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स अगेंस्ट एलएसजी, आई स्टिल फील ही इज नॉट द सेम जड्डू दैट वी न्यू। देखो, अगर 20 बॉल 40 रन चाहिए, मे बी यू कुड बैक द ओल्ड जड्डू टू गेट द जॉब डन, बट आई डोंट थिंक दिस जड्डू हैज इट इन हिम। तो उन लोगों का वो 3 to 6 का गैप तो है ही। हिटमायर भी कुछ इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो आई थिंक दिस कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम इन द टूर्नामेंट गोइंग फॉरवर्ड। Correct. If you see, it's a very long season, and I guess they've won 4 matches out of their 6 games, and they've lost two back to back. And जैसे जैसे मैच बढ़ते रहेगा, people will obviously try and attack the weakness, and this should concern RR going forward. And I feel Hetmeyer's form has been a big concern even in the last year. Last season, he didn't बट click ही so हैड much. अ रियली गुड वर्ल्ड कप। He did, but again, from an IPL team से जो इनिंग्स उसको चाहिए, उसको अब तक वो उसने खेला ही नहीं है। बहुत रेयर सिनेरियोस में उसने ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जहाँ पे दे हैव वन। इफ यू सी लास्ट सीजन ऑल्सो, दे हैव लॉस्ट ऑल क्लोज मैचेस। ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़ा मार्जिन से हारा हो, बहुत हार्डली 1 2 3 रन्स, और दे हैव नॉट टेकन इंपॉर्टेंट विकेट। दैट्स बीन अ सिचुएशन विद देम। नॉट टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, like you've seen yesterday's match, the LSG one, the entire top order failed. It was a collapse, even from the middle order. They'll have to figure this out quickly in the next 2 or 3 matches. So we spoke about their batting. What do you think about their bowling? Do you think they are the best bowling side in the IPL this season? I wouldn't say they are the best here, but they are doing good. यहाँ पे all the ballers are clicking. If you see Andre Berger, Jofra Archer, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, they have been picking crucial wickets whenever needed. Especially Archer has been doing well in the power play. If you see तो इनिशियल 6 ओवर का गेम होता है, वहाँ पे विकेट लेना दो या तीन, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का विकेट वो है. एंड इफ यू सी यस्टरडेज मैच, दैट इज व्हाट ही हैज डन इट. It's very important for all the bowlers to click, and that's what is happening with RR. And that's the reason, one of the main reasons why RR has been doing well, the bowlers are backing them. Hmm. If you see, the best buy for them this season is Ravi Bishnu, and with his performance, he's done well. And he's been there taking as a purple cap on and off.
जब भी मैच मिल रहा है, मौका मिल रहा है, 2 या 3 विकेट ले ही रहा है, एंड इज बीन more or less economical for the team. If you see, इनके बैकअप बॉलर्स आर नॉट दैट ग्रेट फॉर लाइक इन केस कोई इंजुरी होता है. तुषार देश पांडे भी से ही इज अगेन इज लाइक अ टिपिकल शार्दुल ठाकुर टाइप बॉलर जो आपको रन्स देगा, 4 ओवर में 60 देगा, बट विकेट्स भी लेगा, बट इट मे कॉस्ट यू एट 1 मैच or 2 मैच, which is important. One of the main highlights I want to add here is the medium pacer Brijesh Sharma. हम्म। He's been doing quite well. Like जब मौका मिल रहा है इंपॉर्टेंट विकेट ले रहा है. कल उसने मिचेल मार्श का विकेट ले लिया वहां पे एंड इट टर्न द मैच आई फॉर थिंक देम. मतलब नॉट बहुत मिचेल मार्श, सॉरी, आई थिंक द अदर गाय, मुकुल चौधरी का विकेट लिया एंड इट टर्न द मैच फॉर देम. आई थिंक दे हैव बीन वेरी स्मार्ट विद दिस डिप्लॉयमेंट टू। ऐसा नहीं कि उसको सब मैचेस खिला रहे हैं, इट्स यूजुअली बिन अ टॉस अप बिटवीन हिम एंड तुषार देश पांडे, कौन राइट. सा पिच किसको सूट करता है। तो आई फील इट्स अ वेरी डेटा एंड एनालिटिक्स ड्रिवन ड्रिवन टीम राजस्थान रॉयल्स, वेयर हाँ सब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दैट। तो हाँ ओवरऑल मेरे लिए भी इट लुक्स वेरी डिसेंट। Archer, as you mentioned, teen first ball wicket. So I think him breathing fire in the power play has really helped them. He's been bowling well at the death too. But what I feel is they are still not the best bowling side in the power play in the IPL. Also because I feel death overs में उन लोग के पास वैसे bowlers नहीं है. In the match before this, कोलकाता के साथ, ठीक है, Burger had 2 overs left. But Gyan Parab decided to go with Brijesh Sharma. And Brijesh Sharma, although he has done well, IPL वाला उतना वो experience नहीं है at this point. So I feel that is one area where they lack. Death overs is something I feel as you move deeper into the tournament और ज़्यादा important हो जाता है, because then there's that pressure games आ जाते हैं, the margins are there. So from that perspective, I feel डेथ ओवर्स एक एरिया है जहाँ पे उन लोग स्ट्रगल कर सकते हैं। Now I have one very controversial question, which something you mentioned before is, do you think RR is also one of the chokers? 100%, 100%. I feel after Delhi, they have been one of the sides, at least in the recent past. पहले तो चल इतना relevance ही नहीं था. They have had a really good squad in the last 3 or 4 years, but उन लोग वो नहीं capitalize कर पा रहे. I don't know an RR side जहाँ पे उन लोग ने back end of the tournament में अच्छा किया है. I also remember the side, I think it was 3 4 years back, where they started the tournament initially well and then they just lost 5 or 6 in a row, and they just won one in the end and ended up scraping by. हमेशा से उनका इशू रहा है एक्सपीरियंस का, एंड वही चीज उन लोग ने एड्रेस करने ट्राई तो किया है इस बार जड्डू को लाके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चाइल्ड प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी? अमेजिंग. एक ही आता है उसके लिए अमेजिंग यार. द वे ही इज प्लेइंग अराउंड विद द गेम इज जस्ट फिनोमिनल. हम्म। Like Bhuvi also said, yeah, it's pure stroke making what he's playing. He's just not slogging around here and there. And such great पास. बुमराह को पहला बॉल छक्का मारना यार, हिम्मत चाहिए यार. वो माइंडसेट रखना कि यार इतना बड़ा बॉलर को मारना भी बहुत बड़ी बात है. एंड आई होप ही विल टर्न अप फॉर इंडिया वेरी सून. व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग इज दैट आयरलैंड टूर जो आ रहा है, he's been he's going to get selected, but I'm not sure whether वो होगा या नहीं होगा, considering the age, fitness, etc., whatever it is. But yeah, the next watch for the Indian, and that's the reason I guess people will tune in more into the TV for watching him because of the way he plays, the standard he has set over the time. हम्म। What do you think? अग्रीड। मतलब बहुत क्रेजी यार व्हाट इज डूइंग एट हिज एज। मेरे लिए आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आउट देयर दैट्स नॉट बीन सेड अबाउट वैभव सूर्यवंशी। बट मेरे लिए सबसे इम्प्रेसिव ये चीज है कि ये जनरेशन में वेयर देयर सो मच डेटा, देयर सो मच एनालिटिक्स, देयर सो मच ऑफ दीज थिंग्स गोइंग अराउंड, एंड स्टिल इट्स बीन लाइक सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ वे अगेंस्ट हिम। सो इट्स जस्ट रॉ टैलेंट ऑफ अनदर लेवल दैट इंडिया हैव फाउंड। Do you think they will finish the season strong, or it will just be like last time? It's a 50-50 and a dicey thing for me. They either may qualify, they may end up scratching to the fourth position or may end up at five. After 7 or 8 games, right? Lot of teams, like मैंने पहले बोला कि सब टीम का एक प्रिपरेशन, एक माइंडसेट बन जाता है कि कैसे खेलना है एक टीम के अगेंस्ट, कैसे क्या करना है, एंड द प्लॉटिंग हैपेंस इवेंचुअली. व्हाट डू यू थिंक इन दिस? I was just checking as you were speaking that they have won 5 out of 7 now, not 4 out of 6. फाइव.
because yesterday's game also they. Ah, sorry. So I Yes. think they are in a very comfortable position. They have to win what, 3 out of 7. Not So really. I think if there's any team who can choke from this position, it's either RR or DC. But I think, as you mentioned, I still don't see them making the top two. But I still feel they'll comfortably make top four this season. Correct. I remember this one season which you're talking about like 3, 4 years back. So they were comfortably sitting at the top position with 7 wins out of 8 games. Hmm. And they lost like 5 matches in a row. Hmm. 5 matches in a row. And the last one they उनको जीतना ही था ताकि Hmm. वो qualify कर पाए. And they won. So that's it, guys. Well, we've spoken about the RR team. Soon we'll be coming up with the next topic, the next team, and hope we will make it more interesting for you all. Thank you very much, guys. Adios.